Hello everyone, I am Atharv's mom, and like me there are many other moms who have kids between 2 to 3 year old and they want their children to go to school, but in this pandemic it is not possible. And this is really a concern for all of us. So today I am going to share you some of my personal experiences which really helped me to get Atharv engaged. But before getting into this, I want to show you what Atharv learned next. So watch the video till the end. A for B for C for D for D for E for F for G for H for I for J for K for L for M for N for O for P for Q for R for S for T for U for V for W for X for Y for Z for. I hope you like this video, and now talk about preschool and play school. So many parents want their children to go to pre-nursery or primary school, play school, but not just because कि वो आपको वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ पढ़ाते हैं जो आप पेरेंट्स घर पे नहीं पढ़ा सकते. कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो घर पे भी पढ़ा सकते हैं, बट दे वांट देयर किड टू गो टू play school just because they want their children to go to a different environment so that वो different बच्चों से मिल सके, उनके साथ engage हो सके और एक different environment में survive करना उसको आ सके. So this is basically actually the parents want their kid to do. वही environment आप अपने घर पे भी create कर सकते हैं, but yes it is difficult but you can. आप ये नहीं सोच सकते कि आपको अगर स्कूल नहीं भेज रहे हैं आप अपने बच्चों को तो आप घर पे वो चीज़ आप नहीं सिखा सकते हैं. In play school and pre-nursery school, actually they provide a different environment and different activities at one place, and this is the best part actually. They provide different activities like fun activities, sports activities, yoga, storytelling. Every day of a week they provide different activities, and this is the best for a child. But right now you have to maintain these activities in your house also. Right, I'm talking about myself. My Atharv is 2 year 3 month old, and what I'm doing right now is I bought a study table for him so that जब भी उसको पढ़ने का मन होता है, like he can study on his table. Whenever I tell him to let's do study, then he can directly sit on his chair. So this is the best part actually. And if you don't have any study table in your house, so आप एक specific जगह अपने घर पे बना लें जहाँ पर आप अपने बच्चे को आप बोल सकते हैं कि right this is the place for study. And every time जब भी आप उसको पढ़ाते हैं तो आप उसी specific जगह में ही उसे पढ़ाएं. ये जो चीज़ें आप स्पेसिफिक आप जगह है वो आप अपनी फन एक्टिविटीज़ के लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं. राइट, आपको कोई फन एक्टिविटी करनी है अगर राइट आपको कोई स्पोर्ट्स प्ले कराना है तो आप अलग अलग अपने ही घर पे आप अलग अलग स्पेसिफिक जगह आप बच्चों को दिखा दें कि आप यहीं पर आपको ये काम करना है. तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट योर चाइल्ड शेड्यूल्ड इन योर ओन हाउस. And another thing I'm doing right now is I made some worksheets for Atharv, and वैसे तो कई सारी ऑनलाइन ऐसी आपको मिल जाती हैं वर्कशीट्स, बट एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि आप हमेशा अपना फ़ोन चेकआउट करते रहें और देन अपने बच्चे को पढ़ाएं. तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप वर्कशीट जो हैं वो एक हफ्ते के लिए बना लें या 2 days के लिए 3 days के लिए, विच रियली हेल्प्स यू गाइज. So these two things I am doing basically right now. And every day I am exploring myself and figuring out what is best for Atharv, and in future also I will share you all, and so stay connected, and if you like our videos then do hit the like button and do not forget to subscribe our channel. Thank you.